उसको गर्ल्स के फीलिंग्स बताए, व्हाट एक्चुअली गर्ल्स फील इनसाइड, स्पेशली मी. And he's writing exact lyrics on it. Hey guys, this is Sonali Merchante and you're watching React with Sonali. So guys, if you haven't subscribed me already, please subscribe to my channel. And I'm very happy today because I was waiting since morning कब King का song release होगा and I'll make a video on it because actually King ने 2 or 3 days earlier Instagram पे post किया था, teaser डाला था जिसका नाम था मैं बस कहती नहीं. And I was really excited कि मैं बस कहती नहीं is a girl song on behalf of girl, I guess. So I was very excited कि पे behalf of girl है तो I don't know किसके and क्यों, but ऐसे बहुत कम songs मैंने देखे तो मुझे सुनना ही था. And moreover that I'm actually happy because on my channel this is for the first time that somebody has released a song, and right after releasing the song I am making a reaction video jaldi se and aise fatak se I'm gonna post this. So yes guys, I'm really excited for that. And the more over anything I'm actually happy because ye King ke song ke sath hone wala hai and King is one of my favorite artists. So yes guys, without wasting more time, मुझे बहुत जल्दी पोस्ट करना है. So guys, without wasting more time, let's get into video. So इस song का नाम है मैं बस कहती नहीं. The Gorilla Bounce album का song है, produced by Section 8. And yes, by the way, all the Kings fans, please subscribe to this channel. Also share, comment, like, please. Okay, let's get started. Kings Clan, the Gorilla Bounce. My back hurts. मैं बस करती रहती इंतजार तेरा, तुझको ना शर्म आती है ना हया आती है. ऊपर से इतना है कठोर, तुझको बातें ना नरम आती है ना दया आती है. दिल से खेलने का है शौक बड़ा, कल रात. Oh my god, this song is actually, I'm vibing with this song by the way. I don't know, starting के बस थोड़ा सा सुन के I started vibing on it. And as I said कि ये girl के behalf में लग रहा है मुझे, it is on behalf of girl. Actually I could say कि he's sharing girls feeling, what girls feel inside. Yes, let's watch. शौक बड़ा, कल रात पूरी तू बहुत लड़ा, मैं किससे कहूँ कि तू पहले जैसा नहीं. मेरी गलतियाँ तो तू देख बड़ा, खुद गलतियों पे तू पूरा खड़ा, मैं किससे कहूँ कि तू बात सुनता नहीं. कब कहाँ जाता है जो बताता नहीं, वो भी पता है मैं बस कहती नहीं. चेहरा उतरा हुआ अब हंसाता नहीं, कैसी सजा है मैं बस कहती नहीं. Okay. आखिरी बार कब ठीक से की थी बात, इसको पूछो कोई मानता ही नहीं. ऊपर से बनता अनजान जैसे, मुझको तो ये जानता ही नहीं. Oh. झूठ से खेलने का है शौक बड़ा, खुद वादियों में तू पहुंच गया, मैं किससे कहूँ तू मेरे साथ चलता नहीं. तुझ पे जोर मेरा अब चलता कहाँ, मुझे डर है कहीं तू छोड़ गया, मैं किससे कहूँगी तू मुझको ही समझता नहीं. सब कुछ कहता नहीं, मैं किससे कहूँ तू समझता ही नहीं. I like the lyrics because he's trying to say कि if you don't understand me तो मैं किसी और से क्या कहूँ. तो if my partner doesn't understand me then who else will, of course. So सबसे करीबी आदमी नहीं जानता है तो of course I liked it. I am actually feeling
I'm actually feeling this कि किसी ने ना जाके उसको girls के feelings बताए, what actually girls feel inside, especially me. And he's writing exact lyrics on it, which is turning me on, like turning on as in like as an audience, as an fan of him. I'm really liking it because I really feel he's speaking my words out. I'm just okay. Let's see. नहीं कब सब कह जाता है ये भी पता है मैं बस कहती नहीं रिश्ता रूठा हुआ अब मनाता नहीं कैसी रजा है मैं बस कहती नहीं ए तुझे कुछ पता तेरे बिना कैसा बीता मेरा पल है एक हफ्ते से तेरी न खबर बता कहाँ आजकल है तू मुझको भेज कोई जवाब मेरा दिन बन जाएगा तू खुद से As I said, I don't know, मुझे लग रहा है as if ये मेरे words उसको किसी I don't know, he is just speaking out my words. तू भेज कुछ मेरा दिन बन जाएगा. And I guess this is a part of every girl's day कि if you are in love with somebody or else if you have a crush on somebody तो every girl is like कि भाई if I even get a single text or anything from that guy so भाई दिन बन जाता है. उसके बाद the girls are on 7th cloud, 9th cloud bro कि भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता. I'm just happy the way I am right now after doing what I really like to do or what I love doing. Yeah, it's similar. Also one more thing I wanted to say, नहीं बचता है but I don't know मैं यहाँ पे नीचे I'm just vibing it like this. Okay oh no बचता नहीं है. I'm just vibing with this. I liked it and like a lot. मुझे अच्छा लगा. बात करता नहीं क्या मेरा फोन उठाएगा और तुझको खेलने का है शौक बड़ा मैं जख्म देखूं तू कर दे मना सब देख रहे कि तेरा घाव छुपता नहीं तुझ पे जोर मेरा अब चलता कहाँ मुझे डर है कहीं तू छोड़ गया मैं किससे कहूँगी तू मुझको ही समझता नहीं अब बता मुझको ये अब इसलिए थोड़ा सा पहले बिफोर ही सेड दिस मैं किससे कहूँगी तो मुझे समझता ही नहीं. ही सेड दिस आई गेस वो लड़के के फेवर में था कुछ बट द गर्ल इज सेइंग दिस इन बॉयज फेवर कि मतलब समथिंग लाइक ही इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग लाइक their breakup or maybe anything or any situation he is suffering from the same thing too but the guy is not disclosing it of course as boys don't do that a lot. I guess only they share with selective peoples or else best friends or girlfriend maybe. So that's what she is saying ki you don't share or else you are trying to hide what you feel or what you're suffering from but that's you think it's hiding it, you think you're hiding it but the thing is it's actually visible. People could see that you are going through something and I guess this is what the song is about. मैं बस कहती नहीं so it must be something like मुझे सब दिख रहा है but मैं बस कह नहीं रही हूँ और I guess this is something like कि I could see your suffering, I could see everything that you're going through or else your pain or whatever it is but मैं कुछ कह नहीं रही हूँ. And another thing I think is I have a lot in my heart, lot of feelings. As I said, girls keep a lot of things inside but don't share and don't pretend maybe sometimes. That's what he's saying कि there's a lot in girl is saying there's a lot in my heart but मैं बस कहती नहीं. Okay, play. अपनी चोटों से भी कोई बचा है तू बस कहता नहीं दिल है टूटा हुआ ये तुझे भी पता मुझको बुला ले खुद सब सहते नहीं कब कहाँ जाता है जो Okay, so he said this कि if you're going through something call me, make me a part of it,
सब अकेले सहते नहीं. He didn't use this word अकेले, but yeah, that's what he's trying to say कि सब ऐसे ही सहते नहीं. Make me a part of it. Let's go through this together. All right. जो बताता नहीं वो भी पता है, मैं बस कहती नहीं, शहरा उतरा हुआ, अब हंसाता नहीं, कैसी सजा है. That's it for the day. Let's connect again. I feel king. The last bounce. Yes. How can I forget saying this? How can I forget this? So this was the last track of the Gorilla Bounce album, and ये किंग ने देसी डैन बिल्जेरियन के टाइम पे ही ऑलरेडी डिस्क्लोज किया था कि जून में गोरिल्ला बाउंस का लास्ट ट्रैक आएगा, विच इज दिस, मैं बस कहती नहीं. एंड इसके बाद उनका न्यू एल्बम आने वाला है जिसके बारे में उन्होंने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे डिस्क्लोज किया हुआ है. सो यस गाइस, दिस इज इट फॉर द डे. And if you haven't subscribed, please subscribe to this channel. All the Kings fan, please comment down below कैसा लगा ये वीडियो, how was my reaction. And one more thing, being an audience, being a girl, I think कि ये song एक girl के behalf में था, which was a really good thing, because I always seek for songs which is from girls or जो गर्ल्स के साइड से हो, बिकॉज आई ऑलवेज सी समथिंग जिसमें इधर दे आर ट्रोलिंग गर्ल्स और एल्स इधर दे आर लाइक telling girls are gold digger or whatever, what not about girls and to Bewaf and what not bro. But girls के behalf में ये song मिलना was a big achievement, I guess, for me at least, because I really like this rap songs and this rap artist, I really salute them. मैं बहुत सुनती हूँ, like a lot. तो I think कि मेरे Instagram users को ये song काफ़ी बार सुनने मिलेगा on my stories. And if you haven't followed me on Instagram, I'll give the Insta ID here. Also, I'll put the Instagram link in description to follow me on Instagram as well. My name is iam_sana.lee. That's my Instagram ID. So yes guys, that's it for the day. And what's this? I don't know. While watching this video, all the time I was like, why am my nose looking red? And all of a sudden that song hit my mind. I used to sing this in school. And I said, red of the red-nosed reindeer had a very shiny nose. तो वो red of the red-nosed reindeer की वजह से red nose मुझे याद है. And it's actually looking funny. So yes guys, thank you for watching the video till here. Shukriya. Thank you. Bye bye.